everyone, welcome to Adda 24/7. मेरा नाम है उदिशा मिश्रा and once again I am here with some questions. So I had decided that I'm going to be discussing some specific categories of questions with you, the kind of questions that you can expect in the upcoming examinations. Now I had decided why, because now the plan is that we'll be discussing this particular category and then the next category of course will be discussed in the subsequent sessions. As of now, the category that we're going to be taking care of is going to be sentence rearrangement. Now this can be sentence rearrangement along with parajumble, jumble. Now all the students were there with me already. Please go ahead, share the session guys, and a very good afternoon to Shiv Kumar, Payal, Tejal, Nishu, Ashwin, Swati, Harshit, Sonali, hi, welcome. And everybody, Rinku and everybody who's there in the session, very nice to have you all. We need to just get going with it. Just a simple reminder that 8th of March is observed as the Women's Day. Now that we're talking about it, there's one thing. मैं ये हर बार कुछ नया क्यों करती हूँ इस बोर्ड के साथ? I fail to understand. Well, how do I change the color? Like that. Anyway, please go back. Lovely. Alright, so as we were talking about it, how do you pronounce these two words? Because, okay. Yeah, technical team, this pen will work or not? This thing will be visible? Cool. Yeah. Okay. Nice. Sorry for that. I was just trying to understand this technology. You see, उम्र हो गई है, थोड़ा सा नहीं समझ आता. So खैर, यहाँ देखेंगे आपके सामने दो शब्द हैं. एक है WOMEN और दूसरा होता है आपका WOMAN. ठीक है? So what happens is, yes, I do something new every day. Yes, International Women's Day is there. So guys, have you shared the session or not? We're going to talk about something very, very important and an error, or let's say a pronunciation specific error that even I used to do all the time. But I was recently corrected and told not to do that again and again. Doesn't look good on an English faculty at least. Okay? Now, okay, Raj, Nandini and Nishu, you guys are laughing. This is not fair, yeah, come on. Now, anyway, as I see these two spellings, let me be clear about the pronunciation. The singular of the word, when there is only one single lady that you're talking about, that is WOMAN, and that is singular, okay? When you have WOMEN, that is plural. And how do you pronounce that particular word? So, singular, you say woman. WOMAN, woman, okay? But when you have the plural of the same thing, it is women, men. So there is like slight E ki matra and then you go men. So women and woman, these are the two pronunciations. And आप क्या wish करते हैं? International Women's Day, सारी महिलाओं का दिन होता है ये. And 8th of March को जो है इसको observe किया जा रहा है. And 1911 में पहली बार मनाया गया था. इसके पीछे काफी लंबा एक let's say एक movement था. And yes, definitely. Okay जी. हाँ तो राजनंदिनी हो गई है bro. What are you laughing at? That's the truth. We must accept it with a lot of grace. Anyway, so now that we're talking about these two things, never ever say woman, women. It's woman and women, that is about it. Now we'll have a look at our one second. We'll have a look at our motivational quote and see what is the quote trying to tell you today. It is completely dedicated to all the women of our society, all the very strong women of our society. You educate a man, you educate a man. एक आदमी को जब आप पढ़ाते हैं तो आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे मेल फैकल्टीज भी हैं हमारे साथ और हम सबके घर में भी बहुत strong educated men हैं. But generally saying, you educate a woman, you educate a generation. Because even if your mother is probably, let's say, only Sakshar, educated till class 5th, but she's the first teacher you get. She's the one who tells you how to eat properly, how to sit properly, how to walk properly, how to talk properly, how to look proper. Those are some things that she's the first one to teach you. After that, जब तक मेरी mother ने मुझे पढ़ाया था, I was always a topper, or let's say the first ranker or something like that. The moment she gave up, I was somewhere at the end of it. ठीक है? Buffering हो रही है, इंटरनेट पे काम करेंगे, but बहरहाल
अपने घर की महिलाओं को, अपने आप को, अगर आप खुद एक महिला हैं तो, और जितने भी यहाँ पर मेरे साथ पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनसे सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम कहते हैं एक दिन क्यों ऑब्जर्व करें, पूरा साल क्यों नहीं करना है, करिए, पूरे साल करिए, बट जो एक 8 मार्च को एक स्पेसिफिक दिन दिया गया है ना, लेट देम फील द इम्पोर्टेंस, ओके। जैसे मदर के जाने से या सिस्टर के जाने से या बेस्ट फ्रेंड के जाने से ऐसे लगता है ना कुछ खाली हो गया, या थिंग्स आर नॉट रनिंग वेरी स्मूथली नाउ, let them feel that thing, let them feel happy about it. Women's Day is important, and let them feel good about it, okay. Now you'll see your very first question. Here is your first question. It is sentence rearrangement. You have the options. Go ahead, give me the answer. Avinash says educated mothers are very strict. Who says only educated mothers are strict? Should see the uneducated one. Yes, Sakshi. Anyway, now it's time to give me some good answers. Everybody, buckle up. Uh-oh. 1 second. Let me do something. Can we do something about it? We can't. Technical team, can you hear me? ये slide थोड़ी सी कट रही है right side से. Students are saying. Here, students have started giving me answers. Very good, supremely good. हाँ जी, ठीक करवा रहे हैं उसको. आप लोगों में से काफी लोगों ने आंसर भी दे दिया है, तो देखो शानदार शानदार, अभी ठीक कर दिया. थैंक यू सो मच टेक्निकल टीम. Okay, The Economist, the outbreak could in, it is not a fair fight, but it is a fight that many countries' theory have infected twice. Okay, this is not making any sense. People are saying second is the right answer. Okay, let's see if it is true or not. And in this case, you are saying 2. Okay, let's start with the second part of the sentence that says, it is not a fair fight, but it is a fight that many countries, and then next says 1. Many countries, the Economist, the outbreak, many countries, the Economist, the outbreak. Hello guys, wake up, what's happening? Too many celebrations going on, huh? Holi, Women's Day, everything. Wake up, everybody has given me wrong answer. Shehnaz Gill, absolutely incorrect. 1 is not the answer. Abhishek Mehta, and I think Sakshi Soni also. No problem, Megha, you can watch it whenever the internet is better. And Komal says it's D, alright. Looking forward to more such right answers. Now guys, definitely you've identified the first statement absolutely correctly. But let's see, after the first statement, it says it is not a fair fight, but it is a fight that many countries, what? Many countries are what? It is a fight that many countries are facing, going through, fighting, something, right? It is a fight that many countries are experiencing something. Read about it and then think about it. Read it. We're talking about a fight. It is not a fair fight. हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो fair नहीं है, just नहीं है, but एक ऐसी लड़ाई है जिससे बहुत सारे देश गुजर रहे हैं. यहाँ से सीधे चलिए, और अगर आप देखेंगे अपना last statement, will face all the same. बहुत सारे देशों को ये fight face करनी पड़ेगी all the same. जैसे एक कर रहा है वैसे ही बाकी सारे करेंगे. ठीक, और किस फाइट के बारे में बात हो रही है, that's also clearly visible. The COVID-19 pandemics, you're talking about this. And then, because there's a comma, so this is almost like a new sentence, a new clause at least. The COVID-19 pandemics, and then say, what does it do? इसके साथ क्या हो सकता है, ये कोविड के साथ क्या हो सकता है. अगर आप देखेंगे आपका अगला स्टेटमेंट, doubles every 5 to 6 days, ये बढ़ता जा रहा है, 5 से 6 दिन में ये बढ़ता चला जा रहा है. It's catching on to more and more countries, more and more people. That's what they're talking about. अब मैंने आपको बता दिया है कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 4 आ रहा है. So clearly eliminate. The correct answer is right here.
सोच समझ के आंसर दिया करें. जिन लोगों ने बताया था द इकोनॉमिस्ट द आउटब्रेक, क्या मतलब था, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब था, अगर आपको देखना है कि इसका क्या मतलब बन के आ रहा है तो एक बार चलिए आप अपने which part were we talking about? There is a specific word which will connect to it. It is not a fair fight, but it is a fight that many countries will face all the same. Left to itself, the COVID-19 pandemic doubles every 5 to 6 days. When you get your next issue off, you have heard the term issue of a newspaper and issues of magazines, etc. So various, every month there's a new magazine that comes out, right? They're talking about The Economist, my favorite source. Now, the students who listen to me carefully would have identified that we are talking about The Economist, the blog, the magazine, the application. Because you did not pay attention to what I say every day, that's why this happened. Anyway, the correct answer was this. Amazing. Struggling as of now. I will look at the camera later. Just struggling with the board. Thanks. Hey, who's getting angry? Ma'am, मैंने A ही बोला था. अच्छा ठीक है. Couldn't see that. 1 second. No. 1 second. There was this error. 1 second. This is what I was having one of those days. This is what I'm talking about, and we'll mark this as the right answer, and then we'll move on to the next question regardless of. ठीक है जी. Thanks Nishu Gaur. Okay. Thanks. ज़्यादा खुश नहीं होना है तेजल. आंसर दीजिए. कल डांट पड़ी थी ना. Don't get back to that. Okay, we have the next question, and amazing. I'm already getting answers. That's great. Amit, good afternoon. I'm absolutely good. Thanks for asking. SBI PO में आज मेरा lecture नहीं था बेटा. SBI PO खत्म हो चुका है मेरा batch. One of those days. Yep, one of those days. Those days. Where I struggle with the board. Those days. Anyway, now moving on to the next. Okay, so as I can see, a lot of your answers coming in. First of all, I have a question. That is, what do you mean by this specific word, trawling? Can somebody give me the meaning of this word trawling? Trawling. And it's not trolling, it's trawling. So give me the right meaning. If anybody here knows that at all. Okay, ji. Okay, Simi. Sorry, my bad. So नाम ही आती है बेटा, वो नहीं करती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कौन जाने वाला है साथ में, सबको ले जाती है. Okay. Sachin Agrari. Hi Mahima. Now people have given me the right answer, but I'm asking you another question. What is the meaning of the word trawling? Pull something. Nahi yaar, you guys are talking about trolley. You're talking about this that you get at the airport. And also your suitcases have a trolley because you can just troll them through. No. नहीं जी, that's trolling. देखो मैंने कहा था आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. TROLL और W के बीच का फर्क समझें. एक होता है TRAWLING, that's trolling. एक होता है TROLLING, and that's trolling. O से ओखली, ओ से औरत, that is the difference. And now that we talk about this particular word, let me write the meaning here. Search thoroughly. किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ढूंढना, मेहनत करके. ठीक है, अभी यहाँ पर ये ट्रोलिंग लिखा हुआ है. आपका पहला जो वर्ड होने, जो सेंटेंस होने वाला है यहाँ, जो कि आप सबने गलत आंसर दे दिया मुझे. खैर, ट्रोलिंग थ्रू ओशंस ऑफ स्पैम, हेट स्पीच एंड वायलेंट पोर्नोग्राफी. वी आर टॉकिंग अबाउट जब आप बहुत ज्यादा चीजों के बीच में
ढूंढ रहे होते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बोलते हैं oceans of something, right? A lot of something, a lot, like a huge amount of something. In that case, hate speech, violence, pornography, तो इसके बाद कुछ ऐसा ही आएगा because there's a comma. ठीक है, क्या होता है, या on these lines, this is the opening of your paragraph. You will understand why am I saying so. यहां से बढ़ते हैं आगे, आप देखिए, the human filters that Twitter will soon have to catch even more growth. Now what do you mean by the word growth here? Growth आपने सुना होगा, grotesque होता है, anything that's very unpleasant, very bad to see or look at. Now that's what you mean by this particular word. इसको करते हैं पहले explain. कहा जा रहा है कि जब वो ट्रॉलिंग थ्रू कर रहे होते हैं, उसके उस सारी चीजों के बीच ढूंढ रहे होते हैं, ट्रॉल थ्रू एज इन दे गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग, और अब जो ह्यूमन फिल्टर्स, इंसानी होते हैं सारे कामों के पीछे, अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, पर जो भी दे ऑल्सो हैव टू बी इन्वॉल्व्ड एंड ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दे विल सून हैव टू कैच इवन मोर ग्रोथ, अब आने वाले समय में उनको और भी ज्यादा बुरी चीजें देखनी पड़ सकती हैं. तो आपके पास 4 और 1 आपको दिख रहा है, बट इसके बाद ये जो कॉमा है इसको हमने अभी भी फिल नहीं किया है, बट आइडिया समझ में आया कि क्या कनेक्शन है यहाँ पर. ठीक है, एनीवे, as social media content moderators must do is a dismal and unrelenting task. Trawling through oceans of spam, hate speech and violent pornography, when you see as social media content moderators must do, जैसा उन्हें करना चाहिए, so that you know things are not out there in the open. People are posting whatever they feel like, and there are kids and there are elderly people, and then there are people who are sensitive to these things, but they're open to see whatever comes there. So they're talking about when you're going through all of this, as social media content moderators must do, जैसा कि उन्हें करना चाहिए, the human filters, when you go to your first option here, then it connects. The entire story is clear now. So it's 4, 3, 1, and you can eliminate everything other than that. That is why I've given you very clear. Yes, Priya Kumari. Yes, growth means something very, very unpleasant. फिलहाल के लिए आगे देखेंगे. On March 5th, the social media platform started alerting users of fraudulent videos. Fraudulent videos, do you understand? Doctored videos, where I can basically, you know, change people's faces or actually change the background or maybe put in different words there, whatever is being said उसके खिलाफ या उसके opposite हम कुछ वहाँ पर डाल दें और कहते हैं देखो तो ये वाला फलाना ग्रुप तो हमारे बारे में ऐसे बोल रहा था. So doctored videos are the major trend right now. कुछ भी कभी भी कहीं भी present किया जा रहा है, and that's something that's a very very sensitive issue. So उसी के ऊपर आपका ये पूरा paragraph है guys. Fraudulent videos के बाद आप देखेंगे फिर कॉमा है, फिर से चले आइए ऑडियो, इमेजेस दैट हैव बीन ऑल्टर्ड और फैब्रिकेटेड मटेरियल. सो अभी क्या होगा, ट्विटर अपने यूजर्स को वार्न करेगा कि भाई ये वाला जो है ना, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट. अब इसमें क्या कई बार हो सकता है कि सही वाले वीडियोस भी फंस जाएं, बट ऐसा अच्छा मूव है ये, क्योंकि जो बुरे वीडियोस होंगे उनका क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये गलत है, इनके साथ दे प्लेड अराउंड. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप इसका आंसर आप लोगों को क्लियर था. अब बताइएगा अगला आपके सामने जो सवाल है. यस यस प्रिया श्रीवास्तव. Yup. Yes, Hasnain, very good. Tapaswini, thank you for finally getting it. Why do you care? Priyanka Iyer, why do you actually care about that? You're here to study, na? Focus on that. Please sir, come and join us in our session. नहीं दूंगी notebook, you have to come. Okay. Yes, I got it, Bhavna. Very good job, beta. Next देखेंगे. Now this is a little bit about, let's say, Women's Day and all that jazz. Gives you a lot of interesting facts and information.
second and D. I see a lot of kids are giving me option D and a lot of you are giving me option number 2. But, okay, Mahima and Sachin, both of you feel it's B. Tanu also feels it's B. Sandeep says B too. Okay, amazing. Let's see what does it talk about. वो तो देखना पड़ेगा अरुण, अभी पढ़ के देखते हैं. आइए देखते हैं सबसे पहले आप लोगों का जो आंसर है, which the majority says is going to be option number B. तो पहले वो कंफर्म करते हैं. 236145. So सबसे पहले आपको लगता है कि जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, that's going to be International Women's Day grew out of the labor movement to become a UN recognized annual event. Very good job. Looks like you've done a decent job with finding the opening statement here. ठीक है. Regardless, we'll move on and see what's happening next. Third कहता है आपसे, the seeds of it were planted in 1908. The seeds of it यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? Of course, Women's Day की बात कर रहा है. If you can just do me a favor, technical team, there's this kid called शहनाज. बेटा आपको ऐसे ही लंबे क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में, so you need to, I'm saying, there's this student प्रियंका. उनको टाइम आउट कर दीजिए. प्रियंका अयंगर. फिर से. ठीक है. Regardless, we'll move on and see. Third बिल्कुल सही है यहाँ पर. अब यहाँ पे देखो, kids are saying you are a little distracted. I'm distracted because whatever you guys do in the comment section, I have to go through the comment section. Then I see really irrelevant comments and that pisses me off. Regardless, हम 2 के बाद 3 पर गए. जी बिल्कुल सही कनेक्ट बन रहा है. आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, यहाँ 8 आता है. And then we see what's happening next. When 15,000 women marched through New York City demanding shorter working hours, better pay and the right to vote. Okay, what did they do? They were asking their rights to be paid better and the right to vote and shorter working hours, etc. Okay, why were they asking for shorter working hours though? खैर ठीक है, आगे देखते हैं. 6th आपने बोला है, it was the Socialist Party of America who declared the first National Women's Day a year later. Okay, ये पार्टी थी जिसने ये काम किया सबसे पहले. Okay, नॉट बैड. और फिर वहां से चलते हैं ईयर लेटर के बाद आपने 1 बताया है. द आइडिया टू मेक द डे इंटरनेशनल, विच डे अगेन? द वुमेन्स डे. ठीक, इंटरनेशनल केम फ्रॉम अ वुमन कॉल्ड क्लारा जेटकिन. अब आप इनकी क्लारा जेटकिन की फोटो देखिएगा कभी. शी सजेस्टेड द आइडिया इन 1910 एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन इन कोपेनहेगन. एंड देन क्लियरली you can go ahead and see the last one, which is 4th and then 5th. देखो ये तो मैंडेटरी है कि पहले 4th and then 5th आ रहा है आपका, बट आपको कंफर्म करने के लिए एक बार यहाँ पर हमने दिखा दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी. दैट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो ऑल दोज हु सेड डी, आपका सबसे बड़ा इशू ये था बेटा कि आपने इसको ओपनिंग स्टेटमेंट बोला यार. द आइडिया टू मेक द डे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो द डे होता है, जो आपका आर्टिकल द होता है, प्लीज टेल मी वन थिंग, व्हेनेवर यू आर टू स्पेसिफिक अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज को लेकर के बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तब आप दा लगाते हैं, राइट? मैंने बोला है रिपीटेड मेंशन के लिए. तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बात करें, हाउ कैन यू यूज द आर्टिकल दा? दैट्स प्रॉब्लमेटिक. दैट इज व्हाई दैट कुड नॉट बी योर आंसर. डी हटाइए, बी लगाइए. वेरी गुड जॉब टू किड्स हु गेव मी द राइट आंसर. नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. बिलीव दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर दो. कृतिका पाठक, ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमेशा जो भी पैराग्राफ दिया है या सेंटेंस दिया है, ये फिगर आउट करना रहेगा कि मुद्दा क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं. पिछले वाले में हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में, तो वो कब, कहां से, कैसे शुरू हुआ, ये जानने से पहले हमें ये फिगर आउट करना था कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. बिकॉज इफ यू हैव रेड स्टोरीज, यू हैव रेड न्यूज़पेपर्स, यू हैव रेड सेंटेंसेस फॉर दैट मैटर, you get to see that the very first or the initial part of the sentence gives you the idea what are we talking about. ठीक है? So when you get that clarity, things become easy for you. अच्छा, everybody through and through CCC. आहा, क्या बिल्कुल सही आंसर दे दिया क्या? यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा है मैंने? क्योंकि गलती से मैंने, खैर चलिए देखते हैं. कांग्रेस MLA from Suvasra
हरदीप सिंह डांग हु वाज अमंग, तो ठीक है ये तो क्लियर है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको एकदम सामने पहले सेंटेंस में दिया है, तो जी हाँ ओपनिंग आपका फर्स्ट से होने वाला है, हमने बाकी सब एलिमिनेट कर दिया है। एनआरआर का मतलब आप जानते होंगे गाइज, नो रिप्लेसमेंट और रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। नाउ वील गो एंड सी हु वाज अमंग, और हमारा जो पहला वाला है दैट सेज फोर्थ, who was among his region's development, doesn't make any sense। वो अपने region के development में थे, मतलब he was among something like a group or a team or something, but among his development doesn't make any sense। So यहाँ पर हमारा ये जो fourth वाला है that's not making sense, clearly 1 and 5 are making sense here। We'll see why he was among the 4 reportedly missing MLAs believed to be। वो जो 4 लोग गायब हो गए थे और उनको क्या सोचा गया था या अज्यूम क्या किया गया था, believed to be ferried to बेंगलुरु by the बीजेपी, ऐसा सोचा गया था कि बीजेपी उनको जो है बेंगलुरु लेकर के गई है। फॉर व्हाट? ऑन थर्सडे टेंडर्ड हिज, मतलब फॉर व्हाट नहीं बताया है। अब उन्होंने क्या किया, ऑन थर्सडे जो है अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। क्या कहते हुए कि जी ये लोग अच्छा रेजिग्नेशन दिया तो किस तरह से दिया, किस पोस्ट से दिया, वो भी हमें क्लैरिटी चाहिए। एज ए लेजिस्लेटर उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया, सेइंग कि ये लोग मेरी जो रीजन का डेवलपमेंट है उसको इग्नोर करते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ कृतिका वाज आस्किंग कि ओपनिंग सेंटेंस कैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ सब्जेक्ट होता है जो आपको मिल गया है, कांग्रेस, एमएलए, सुवासरा, हरदीप डांग एटसेट्रा। तो इसमें आपको पता चल गया कि आप पर्टिकुलरली उनके बारे में बात कर रहे हैं, बट कई बार जो आपका आइडिया होता है, टॉपिक होता है गाइस, दैट्स अ लिटिल मोर एलैबोरेट, सो हमें ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है उन चीजों को, ठीक है। Now let's see if we have one more question. Yeah, this would be the last question. Then I have a list of very amazing words, guys, which were coined by women. ठीक है, वो शब्द जो कि महिलाओं ने बनाए हैं, coin किए हैं। टेक्निकल टीम, सब मर जाएंगे, बस त्रिवेदी बचेगा। थैंक्स सूरज, थैंक यू। अरुण आर्या, बेटा मेंस और प्री एसबीआई पीओ का आपका क्लर्क के मेंस लेवल का होगा। सो एसबीआई पीओ का जो प्री होगा वो क्लर्क का मेंस लेवल रहेगा, ठीक है। ठीक है, आंसर्स फिर से एक बार आने लग गए हैं। He had purchased nearly a kilogram of gold. Okay, ठीक है। He लिखा है तो पता है that cannot be our opening statement. Her husband Raj Kundra and others for allegedly duping, fraud में involved थे उन लोगों के साथ, cheating, ठीक है। And then a complaint of cheating has been lodged against. Now लिखा हुआ है, clear cut idea यहाँ से लगता है कि this actually can be the opening statement, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, Mr. Kundra in a late evening statement denied the charges. What charges? No clue. A gold trading company, अच्छा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, formerly headed by the couple लिखा हुआ है। अभी ये couple कौन है? We have no clue. किसके बारे में बात हो रही है हमें तो अंदाजा नहीं है, सो हम उसको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बना सकते। सचिन जोशी, a non-resident Indian, approached the Khar police recently with a complaint that he had been cheated by Satyug Gold Private Limited। अच्छा, सचिन जोशी जो हैं वो एक एनआरआई हैं और वो एक पुलिस स्टेशन में गए और बोला उन्होंने कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इन्होंने हमें चीट किया है, ठीक है। लेकिन ये क्यों गए इसके पहले हमें जानना पड़ेगा, ये किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। एज यू ऑलरेडी सॉ गाइस, सी जो आपका स्टेटमेंट है दैट्स गिविंग यू a complaint of cheating has been lodged against Bollywood actor Shilpa Shetty, her husband Raj Kundra and others for what? For allegedly duping an investor in a gold purchase scheme. So इस चीज का elaboration यहाँ मिला है आपको, gold purchase scheme, the city police said on Thursday.
सी के बाद हम कहाँ गए हैं, बी पर गए हैं. एंड लेट्स सी, एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन. करेक्ट आंसर सी बी डी एफ ई ए. कितने लोगों ने ये बताया था? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. सबने ही ऑप्शन ए बताया है, सो वेरी गुड. सिमी, देवेंद्र एंड सचिन राजपूत, स्वाति गुप्ता, आरती त्रिपाठी, लवली. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सवालों का एक पूरा वो था, वो दैट इज ओवर. वी हैव 3 important and interesting words. Those were coined by women because we are very close to the day which is observed as the International Women's Day, guys. So ये 3 वो शब्द हैं जो बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे, बट ये 3 मुझे पसंद आए, तो मैंने आपको वो लिस्ट दी. Okay, Gauri ji, so I hope you liked it. Okay, Ayushi Saxena is a new student. Thank you, nice to know that. जी, वेरी गुड. जिन्होंने भी सही आंसर बताया, बहुत ही बढ़िया. यस, यू कैन राइट actor as well, so that's fine. Yes, Sandesh Roy, late as usual. Anyway, now you have 3 words here. Mondegreen, a misunderstood or misinterpreted word or phrase resulting from a mishearing of the lyrics of a song. We all have done this. We all have done this. Trust me, I have a list of songs that either me or my family members or my friends would sing, which is not even close to what's written in the lyrics. For example, Just Chill, Chill, and the other song, Pump Up the Gem, something like that, ठीक है? So ये जो गाना सुन के फिर हम उसका गलत मीनिंग निकालते या गलत लिरिक्स उसकी हम कॉइन कर लेते हैं. I'd like to ask my team, आप लोग जस्ट चिल को क्या गाते थे भाई? So इस तरह से जो आप गाने सुनते हैं गलत फिर गाते हैं. जैसे Pretty Woman was one of the songs from कल हो ना हो, और उसको बहुत सारे लोग कुड़ी गुमा गाते थे. So that is exactly this thing, Mondegreen. That entire thing is called Mondegreen. Okay, you can say that was okay. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके लिए एक अच्छा वर्ड. सीख गए हैं अब आप लोग, और इसका इस्तेमाल तो आप आई थिंक एवरी नाउ एंड देन कर सकते हैं. सारे लोग गलत ही बोलते हैं मोस्टली. खैर, यस, मेरे सिबलिंग्स भी बहुत कॉन्फिडेंटली गलत गाते हैं. एनीवे, नाउ यू हैव मिसोजिनोir. Now this is pronounced as misogynoir and it is the specific hatred, dislike. देखो misogyny क्या होता है? सारी महिलाओं की तरफ होने वाला एक hatred या dislike. ये क्या करेंगी महिला हैं, whatever, something like that. ठीक है, moving on. But this is particularly towards black women. ठीक है, जब आप specifically एक black women के खिलाफ hatred या dislike या फिर distrust दिखाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं misogynoir. ठीक है. शहनाज गिल गाती थी गुडी वुमन. Oh my God, I think I'm gonna. Yes, yes, yes. This is brilliant. You guys are amazing. Anyway, next देखेंगे हम लोग यहाँ पर लोग का वर्ड क्या होता है. तो यार होता नहीं वो फार्म टू टेबल. आजकल ये हमारे जितने ऑर्गेनिक कैफेज होते हैं बड़ा प्राउडली प्रेजेंट करते हैं, मैम दिस इज फ्रॉम फार्म टू द टेबल, ऐसे करके कि बगल में ही बिल्कुल हमारे या आसपास हमारे फार्म्स हैं, वहाँ पर हम इन चीज़ों को उगाते हैं, देन वी ब्रिंग इट टू द टेबल. सो बड़े ऑर्गेनिक हैं, हमारे ही यहाँ के हैं, या हमारे जो वो फार्मर्स मार्केट्स होते हैं वहाँ से हम सामान ला के आपके लिए कुक करते हैं. तो अगेन वेरी नेचुरल, बिलोंगिंग टू योर लोकल, I mean locally grown food के ऊपर है. A person whose diet consists only or principally of locally grown produced food. ठीक है, so ये हो जाएंगे 3 important. Okay, बेबी मिश्रा, thank you very much. हाँ, वो सबने किया है बेटा, there's nothing. हाँ जी, कल भी मेरी क्लास रहेगी. And no, misogynoir is an English word. So ठीक है, खैर यहाँ पर I had a great session guys. Only because जब भी फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं तो we need to give you guys some time to chill as well, right? So खैर यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया. हम आप लोगों से कल भी मिलेंगे. ऑल्सो जब हम छुट्टी पे रहेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं हमने. छोटे छोटे बाइट साइज आप लोगों के लिए वीडियोस होंगे. जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेशन आपके लिए यूट्यूब पर चलेगा हमारा. सिमिलरली EPFO का भी एक सेशन चलेगा. तो टाइम निकाल करके पढ़ना मत भूलना. खूब सारे मजे करिए, इंजॉय करिए. ठीक है, हाँ, और
आप लोगों के साथ connect करके again. I had a lot of fun. So please don't forget to subscribe to the channel. Thank you very much for being regular students of my class. And also guys, I always keep saying कि you guys are going to make me proud. You guys are going to do very well in life and everything. That is there. But hard work is important. Hard work is important. We cannot conflate optimism with certitude, right? I mean, hopefulness होती है कि हाँ ये मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करेंगे, but guarantee नहीं होती है, right? So you get my point. So don't fall for that again. पढ़ाई लिखाई करिए, ध्यान रखिए, हम मिलेंगे आपसे फिर. Take care, all the best, bye bye, bye bye.